Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Nabila Bashir and I welcome you to Century Press and Publishers. प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं नर्सरी मैथ और नर्सरी मैथ में हम ऑलरेडी काफ़ी सारे नंबर सीख चुके हैं। क्या आपको याद है कि अब तक हमने कितने नंबर सीखे हैं? That's right. हमने सीख लिए हैं नंबर 9, यानी नंबर 9 तक हम सब नंबर्स सीख चुके हैं और नंबर 9 तक हमें सारी काउंटिंग ऑलरेडी आती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की वीडियो में हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो है तो नंबर से रिलेटेड, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट कैसे है मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, these are my fists. Now I am going to open my hands one by one and you are going to tell me what is there in my hand or in my hands. So I am going to open my right hand. Oh wow, there is a bottle cap in my hand. So let's see, what do I have in my other hand or in my left hand? Oh, there is nothing in my hand. I have a bottle cap in my right hand, but my other hand is empty. There is nothing in my hand. That means 0, 1 and 0. It's empty. There is nothing. So we are going to learn about number 0 or the concept of nothing. The concept of nothing. Now look here, I am holding a pen holder in my hand. Can you see there are some pegs inside the holder? Can you see them? There are some pegs. Okay, so that means there are some pegs and we can count them like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I have 9 pegs. अब मैं आपको ये वाली बास्केट दोबारा से दिखाती हूँ। आपने अंदर से इसको गौर से देखना है। पहले तो इसके अंदर कुछ pegs थे, अब देखें इसके अंदर क्या है। Oh wow, there is nothing. It's empty. So there is nothing inside the basket. That means nothing is there. Nothing means 0. There is 0 peg. That means it's empty. So this is how we learn about number 0. 0 means nothing. 0 means nothing. So I'm going to show you some fingers and you are going to count with me. 1, 2, 3, 4 and 5. So how many fingers are there? 5 fingers are there. So how many fingers are there on the other hand? I'm not showing any finger. That means 0. That means 0 and 0 means nothing. 0 means nothing. It means when you are not having anything for the counting objects. It means when you are not having anything for the counting objects. It means nothing. अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। पेज नंबर is 13. Concept of 0 and 0 means nothing. 0 means nothing. अब हमारे पास कुछ सेट्स हैं, हम इनको जल्दी से काउंट करेंगे और आपने मुझे ये बताना है कि किस सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ कहाँ पे 0 ऑब्जेक्ट्स हैं। So how many mangoes? 1, 2 and 3. How many mangoes are there? 3 mangoes are there. On the other side, how many mangoes? It's empty. There is nothing. So nothing means 0. Now we have some flowers. How many flowers are there? There is just 1 flower. And on the other side, how many flowers are there? It's empty. Empty means nothing. There is 0 flower. Now we have another activity. Tick the options which has 0 objects. हमारे पास 2 different sets हैं। हमने उस सेट को टिक करना है जहाँ पे nothing यानी 0 objects हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास कुछ pencils हैं। How many pencils are there? 1, 2 and 3 pencils are there. Are we going to take it? No. So on the other side, the box is empty. There is nothing. So it means 0. हम इसको टिक करेंगे। जी अब जरा नीचे आ जाए। एक बॉक्स तो empty है, यानी there is nothing. And on the other side, आपको कुछ fruits नजर आ रहे हैं। So how many fruits are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो आप किसको टिक करेंगे? आप 6 वाले बॉक्स को या empty बॉक्स को? जी बिल्कुल, हम उस बॉक्स को टिक करेंगे where there is nothing. तो इस तरह से आपने अपना 0 का पेज कंप्लीट कर लेना है। आई होप कि आपको 0 का मतलब और नथिंग का मीनिंग समझ आ गया होगा। When there isn't anything, it means 0. It means 0. 0 means nothing. Thank you so much for watching the video. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।